बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों फंक्शंस का ही दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं हम, यानी फंक्शंस का ही लेक्चर है, ये उसका दूसरा पार्ट है। जैसे कि हमने फंक्शन से बात करनी शुरू की थी तो हमने कहा था कि ये फंक्शन एक रिलेशन ही होता है और फिर हमने रिलेशन की डोमेन और रेंज की बात की है, क्योंकि हमें फंक्शन की भी डोमेन और रेंज की बात करनी है। आज हम फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाने लगे। A function f from a set x to a set y, denoted f from x to y, is a relation from x, the domain, to y, the codomain, that satisfies two properties. Number one, every element in x is related to some element in y. Number two, no element in x is related to more than one element in y. Thus, given any element x in x, there is a unique element in y that is related to x by this function f. If we call this element y, then we say that f sends x to y or f maps x to y, and write f from x to y or f from x to y. The unique element to which f sends x is denoted y is equal to f of x and is called as f of x, or the output of f for the input x, or the value of f at x, or the image of x under f. The set of all values of f taken together is called the range of f, or the image of x under f. Range of f is equal to image of x under f. Y belongs to y such that y is equal to f of x for some x in x. अब इसी फंक्शन को हम एरो डायग्राम से देखते हैं. In this arrow diagram, we have two sets x and y. And this function is going from x to y, means arrow is from here x to y. There are some elements in this set x, x1, x2, x3 and x4. Similarly here y1, y2, y3, y4 and y5. Now we can see x is related with y3, x1 is related with y3, x2 is related with y1, x3 is related with y3 and x4 is related with y4. And in this arrow diagram we can observe that every element in the set x has an image y here in the second set. और या हम इन अदर वर्ड ये कह सकते हैं कि x के हर एलिमेंट से एरो जा रहा है y के किसी एलिमेंट की तरफ. Secondly, we have no element of x has two arrows coming out of it that points to two different elements of y. In other words, we can say every element in the set x is related uniquely with some element of y. So, by this arrow diagram, we can see that this relation is a function. Now let's take an example in which we have different arrow diagrams. The sets are x and y. Here it is x, and this set is y. So this x contains a, b and c, and y contains 1, 2, 3, 4. Again, this is some other arrow diagram of some other relation. This is x and this is y. This is x and this is y. So in the first figure A, we can see A is related with 1,
but B is not related with any element in the set Y. So C is also related, but due to this element B, this is not a function. Here in the second figure B, A is related with 1 arrow is going from A, 1 arrow is going from B, and 2 arrows are going from C. So here we can see that C is not related uniquely with some element in Y, that is इसका एक यूनिक इमेज नहीं है Y में, बल्कि दो इमेजेस हैं. Therefore we can say that this relation is not a function. But here in C, this is a function, as every element in the set X is uniquely related with some element in the set Y. हमें नजर आ रहा है कि A का भी एक यूनिक इमेज है 3, B का भी एक यूनिक इमेज है 1, और C का भी एक यूनिक एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन है 3 के साथ. So only this figure shows that this relation is a function. Again we are going to have some definition of inverse image. So given an element Y in Y, there may exist elements in X with Y as their image. If f of x is equal to y, then x is called a pre-image of y or an inverse image of y. The set of all inverse images of y is called the inverse image of y. Symbolically, यानी inverse image of y क्या होगा? वो x का कोई element होगा. Let x is 1, 2, 3, 4 and y is a, b, c, d, e and define f from x to y by the following arrow diagram. ये एरो डायग्राम क्या शो कर रही है? ये उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है जो x और y के दरमियान यहाँ पे डिफाइन हो रहा है. मसलन 1 का रिलेशन b के साथ है, 2 का a के साथ है, 3 का c के साथ है और 4 का b के साथ है. बट हियर वी कैन सी कि 1 का इमेज b है, 2 का इमेज a है, 3 का d है और 4 का b है. लेकिन अगर हम इसके इनवर्स इमेजेस देखें देन वी कैन सी कि a का इनवर्स इमेज 2 है, B का इनवर्स इमेज 1 भी है और 4 भी है, और D का इनवर्स इमेज 3 है. राइट? C और E का कोई भी इनवर्स इमेज नहीं है. राइट? नाउ दीज आर फंक्शंस डिफाइंड बाय एरो डायग्राम्स. एक फंक्शन और यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है. 1a जो है वो 2 के साथ रिलेटेड है, B 4 के साथ और C 2 के साथ. तो ये रिलेशन एक फंक्शन है. द क्वेश्चन इज टू राइट डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ f. B part, find f of a, f of b and f of c. What is the range of f? Is c an inverse image of 2? Is b an inverse image of 3? Find the inverse images of 2, 4 and 1. Represent f as a set of ordered pairs. So let's come on part A. So this is about the domain and codomain. So we all know कि domain जो है हमारा first set होता है, यानी x के elements होते हैं. तो यहाँ पर domain के elements आ जाएंगे a, b और c. We can write domain as set के अंदर हम लिख सकते हैं a, b और c elements. Similarly, codomain of this function is that contains 1, 2, 3 and 4. These all are included in codomain. Now here f of a, f of b and f of c. F of a means the image of a, that is 2. F of b is the image of b, that is 4, and f of c is equal to 2. What is the range of f? So range contains those elements which are images of some element in the set X. So images हमारे पास दूसरे set में से 2 और 4 हैं. Therefore we are going to add these two numbers in range. So range of f will contain only two elements, 2 and 4. Is C an inverse image of 2? Yes, C is an inverse image of 2. Is B an inverse image of 3? No,
3 have no inverse image here. You can see there is no arrow coming from any element to this 3. So 3 का inverse image यहाँ पे नहीं है. Find the inverse images of 2, 4 and 1. It means कि हम 2 का inverse image देखें तो 2 inverse images हैं. That is we can write कि inverse image of 2 is equal to A and inverse image of 2 is equal to C also. Inverse image of 4 is B and inverse image of 1 is nothing. Represent F as a set of ordered pairs. तो मैंने इसको F को यहाँ पर ordered pairs में लिख लिया, यानी A is related with 2, B is related with 4 and C is related with 2. और ये जो F है ये एक रिलेशन है जो कहाँ से आ रहा है, जो हमारा X क्रॉस Y से आ रहा है. यानी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया और उसके अंदर से हमने वो एलिमेंट चूज किए हैं जो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं.